Arpit, go ahead with the introduction first. My name is Zafir Yadav. I belong from the Kanpur Dehat, Uttar Pradesh, and I completed my schooling from the Woodbine Gardenia School, Kanpur, and I pursued my BTech in the civil engineering from the JSS Academy of Technical Education. Along with this, I also learned some civil related apps like AutoCAD and StatPro. And my father is a teacher, and my mother is a woman. Okay, fine. So, why did you choose civil engineering for yourself? Ma'am, from starting, it's very fascinating for me. Then how the construction things works, it's like a construction of a building, and from my social background and my family background, some of my family members are also civil engineers, so they give me that kind of advice, and I also more inclined toward the civil engineering because the environment of my home is like that. So I'm choose the civil engineering. Your father is a teacher, right? My father is a teacher, but my elder brother is a civil engineer. Okay, fine, right. So, Arpit, tell me why you think that you're a better option than other candidates? Ma'am, as I think when an organization is hiring an employee, those they should check the certain traits in that employee, just like an honesty, responsible, how much a person is responsible, disciplined, and he shares a common vision the organization. And I believe I'm the above average in these traits than other members. As far as my academic credentials are concerned, there are other there are other members or other students who have better or more than me, but the soft skills that I have, I think I have above than average. Okay. Arpit, tell me about your three good strengths and two weakness. And strength, because work ethics, uh, and flexibility toward the work actually, and responsible, and I'm willing to devote fully toward my work. Okay, right. And weakness, what did you mention? Repeat that one. Weakness is about, I think I concentrate too much on the detailings. This is good to a certain extent. When there is a too much uh, time constraint or something, and other things related to the time, so this may be harmful because detailing to the each and every points may be some time taking. And the other thing is, I'm more like straightforward. It may be not good for everyone, and they are not like me in this way. Okay, so Arpit, tell me your any past biggest challenge you have achieved so far, and if you try to overcome it out. My biggest fear was like a stage fear or speaking in front of many people, and still I'm improving in that way, because communication is just like a matlab, speaking on in few people's in front of me, and I'm also improving in that because what I'm saying and what is inside mind is still differs. And yes, Okay. ma'am. So, Arpit, why do you think that you should be or you are the good option for RPSC, or why you want to join NPCIL in particular? And no doubt, NPCL is a great organization, and I think I would get so many new things to learn here, as there are many projects are running in the NPCIL, and NPCL is the one who commission, construct, and operate the nuclear power plant. And as a being civil engineer, I'm more inclined toward the design and the construction part. And from the individual point of view, I'm more science fiction type person. So the word nuclear or the nuclear power that fascinates me. So I'm also in my uh, during graduation time, I was always willing to do something toward my uh, what I want. Just like s- nu- nuclear is something that really excites me, and this would be good for me, and it would be very
dream come true for me if I get this chance. Okay. Arpit, state one thing that why you think that you are different from others, or what are the skills in you that makes you different? Skills. As I mentioned that the things related to the hard skills, there are so many other uh, students in this race who have better or good. But when it comes to the soft skills, just like honesty, work ethics, discipline, and devotion to the work, and completing the work before the deadlines, and the more focus toward the work, I think that is above the average. See, Arpit, first thing I would say Yes, ma'am. about is that you need to improve a lot. There are a number of aspects which I had noticed in you. Content-wise, you Yes, ma'am. need to improve it out, right? At the very Okay. start, if I say that why you're better than others, what makes you different from others, it can be very simple answer. I think that I am better from others in the terms of you can say theoretical and academic knowledge which I've gained, right? अब अपने theoretical skills Okay. की बात करूँ that you have a good theoretical skills, you have good hold in it, or some core strength. Apart from it, ma'am, I've got certain soft skills which are very essential for any person to be a part of, or you can say a set in this organization. Something like you are a very good learner, you're a very adaptable person, and you have some kind of, you can say, trustworthiness. So something like this you could Yes, ma'am. mention in the area, like why you are better option. इसमें आपके Okay. तीन क्वेश्चंस बनते हैं, राइट? जैसे Yes, ma'am. if I say it out, being a fresher, why you should be hired? You have to convince us that you are suitable Ma'am, in the. actually, I'm not a fresher. I'm giving you an example of it. Okay. That these are Okay. the questions which are being made when it is in the comparison of two people, right? आप लोगों से Okay. बेहतर क्यों है? आप में क्या ऐसा डिफरेंस है कि आपको क्यों सिलेक्ट किया जाए? अगर आप फ्रेशर हैं तो Okay. आप जॉब चेंज कर रहे हो, अगर आप उधर लॉयल्टी नहीं निभा रहे हो तो हमारे साथ क्यों आना चाहते हो? मतलब देयर आर सर्टन एस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कम इन वन कैटेगरी. कैटेगरी वाइज आई एम टेलिंग यू कि कितने क्वेश्चंस Okay. बन Okay. सकते हैं एक पार्ट से, ठीक है? तो उसमें And या I need to improve in the content side need to actually. improve in the content, you need to use your choice of words. So choice of words could be like, ma'am, I can be a particular asset for you, or I can be an asset to the organization which I'm coming for because I carry these certain soft skills in myself, right? जैसे soft skills Okay. word आ गया, asset word आ गया, ये कोई भी इन चारों पांच कैटेगरीज मैंने आपको दिखा दी. इन पांचों कैटेगरीज में एक वर्ड फिट हो जाते हैं, किसी भी तरह से आ Okay. जाता है. हम आपको क्यों हायर करें? आप हमें बता सकते हो कि आप में क्या ऐसी खासियत है, और वाई आपको क्या लगता है जो बाहर बच्चे बैठे हैं उनको क्यों नहीं हायर करना चाहिए? ठीक है. अब जैसे आपको मैंने Okay. क्वेश्चन पूछा वाई एनपीसीआईएल, इट कैन बी वाई Okay. पीएसयू, वाई Yes, एनपीसीआईएल, ma'am. वाई नॉट एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन. मतलब इस मॉड्यूल में तीन चार क्वेश्चंस बनते हैं इस पैटर्न में, इस सेगमेंट में. तो जब इस Yes, सेगमेंट में ma'am. क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग किया प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया, ठीक है? सो दे कैन Yes, आस्क यू ma'am. कि टेल अस द थ्री रीसेंट प्रोजेक्ट्स व्हिच यू हैव आइडेंटिफाइड. हमारी अभी हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. तो जो जो क्वेश्चन का आंसर देते हो ना, डू रिमेंबर इट आउट दैट यू विल बी गेटिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दैट रन ओनली. If you started with the project only, it could be tell us the three projects or three identified projects. Which was a project which you find very much interesting or you would like to discuss with us? Can you just suggest us any changes which you should make on the website? मतलब फिर आपके उसी पे मूव करेगा. Either started in a very Okay. simple run, मैम आई थिंक दैट एनपीसीएल और बीट एनी पीएसयू. अगर तो पीएसयू वाला क्वेश्चन आता है, अगर Okay. एनपीसीआईएल का आता है तो सिंपल शिफ्ट करो मैम, इट इज अ प्रेस्टिजियस पीएसयू, राइट? Second is that Okay. I have my academic interest towards NPCIL. Moreover, I find that the core area where I'm targeting, I would be selected over this. And the job culture, the work culture over here is quite, you can say, diversified, plus growth learning. It is some of growth enrichment you're going to get. ठीक है? तो Yes. टारगेट ऐसे करना आंसर्स को कि उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन का बने ना आपसे, वो इजीली आप Yes, कर ma'am. पाओ. ये ना हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रैप हो जाओ. रट्टा नहीं लगना चाहिए. Yes, ma'am. आप में वही प्रॉब्लम है, आपके आंसर्स यू आर गुड इन इट, आप दे रहे हो क्वेश्चंस के आंसर्स दे भी रहे हो. दो तीन चीजें आइडेंटिफाइड है आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स. आपका एक होता है हायरार्की स्ट्रक्चर का सीक्वेंस, जैसे पहले क्या बोलना है बाद में क्या बोलना है, डायरेक्टिंग. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट योर कंटेंट इन टर्म्स ऑफ किस लाइनर को सूटेबल बोलना है, लाइंस क्या है. ये तीन चीजें यू नीड Yes, इम्प्रूवमेंट. ma'am. ठीक है? बिकॉज आई ऑल्सो नीड टू आइडेंटिफाई वेयर यू आर लैकिंग, what should be there in the Yes, next chart, ma'am. what kind of a questions you are able to handle. अभी तो मैंने कोई situational questions नहीं पूछा. जैसे अगर मैं पूछूं are you okay, like the people who find like they find that they are good option for them, they do ask that are you okay with job relocation. So what will you answer in it? Zero Actually, ma'am, I job don't. relocation and food barrier, are you okay with it? I'm okay with it.
Okay, how would you manage the job relocation or the food barrier, the language barrier? एक्चुअली आई एम फास्ट लर्नर। No. अभी बोलो ना, इट्स सॉरी। सिंपल। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट था, ये हर एक से पूछते हैं जिनको भी वो लगता है ना कि वो दे आर गुड कैंडिडेट्स फॉर देम। सो यू आर कमिंग फ्रॉम दिस रीजन, आर यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू बी ओके फॉर द जॉब लोकेशन? बिकॉज वहां पे फूड बैरियर आएगा, लैंग्वेज बैरियर आएगा, कैसे मेकअप करोगे इससे? तो यू विल से इट आउट, मैम, लैंग्वेज बैरियर दो इट्स टफ थिंग, बट आई वुड से दैट वी ऑल हैव गूगल ट्रांसलेटर दीस डेज. So at the very beginning, it will be very comfortable for me. We all are technocrats. We will be using it out. But with the passage of time, I'm a good learner. I will be adapting with it. You know, the smart answer we gave it out. कि उस टाइम पे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना कि भाई ये बोलना है. अच्छा, फूड बैरियर, मैम, फूड इज नेवर अ बैरियर फॉर मी बिकॉज आई ऑल्सो लुक मोर फॉर माई पैशन एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच आई कैन कोप अप इजिली व्हेन वंस योर हार्ट विंस आउट. कि मतलब आपने अपने पैशन के पीछे आप कहीं पे भी शिफ्ट हो सकते हो. एक कहने की होती है, दो स्टूडेंट्स डू हैव सम प्रॉब्लम एंड ऑल दैट, बट द काइंड ऑफ आंसर्स यू हैव टू प्रोवाइड. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू, आपके कंटेंट में, आपके सीक्वेंस में, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स में, तीनों में कमी है अभी. ठीक है. अभी तो मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जस्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर एट्रीब्यूट एक्चुअली, बिकॉज यस इट्स अ मैम। फर्स्ट इंटरेक्शन. सो द नेक्स्ट इंटरेक्शन इट विल गो इन दैट वे where I'll be asking you some situational question. Okay. Second, it will be related to the website I'm going to ask you. Website. And third, it will be your academic and job opportunity. Job experience you are handling right now. क्या roles and responsibilities हैं जो आप जॉब कर रहे हो? आपके करंट जॉब में आप चेंज क्यों करना चाहते हो या क्यों की थी आपने जॉब चेंज? राइट. वहां पे आपका कोई चैलेंज था जो आपने मीटअप किया हो? एनी बिगेस्ट यू कैन से रेम्यूनरेशन यू हैव गॉट? मैम एनी एक्चुअली ये, ओके, ये वेबसाइट वाला क्या था मैं समझ नहीं पाया एक्चुअली। website is like what is the mission which is being mentioned on the NPCL website? What is the vision? ओके। Any drawbacks you have seen on the NPCL website? Would you suggest us any changes if you get a chance to work with us? What is the running current projects? Right? तो इस तरह ओके। से. What is our logo? Where it is being placed? They do ask this question. आपने हमारी वेबसाइट देखी थी? तो स्टूडेंट से यस. ओके, तो वेबसाइट में लोगो किस साइड पे है? तो देन द स्टूडेंट्स क्या, कलर स्कीम क्या है हमारी? जस्ट टू गेट एन आइडिया कि बच्चे एक्चुअल में देख के आ रहे हैं और दे आर जस्ट स्पीकिंग फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग. ठीक है. तो देर आर डिफरेंट डायमेंशंस अर्पित वेयर द क्वेश्चंस एक्चुअली गो ऑन. यू हैव टू प्रिपेयर एवरी सेट सो दैट आपका कोई भी पार्ट ना बचे. वेबसाइट का ना बचे, सिचुएशनल क्वेश्चंस का ना बचे, ऑर्गेनाइजेशन का ना बचे, पर्सनालिटी वाइज ना बचे, एकेडमिक वाइज ना बचे, और लास्ट बचा जॉब वाइज. ठीक है. तो हम ये सारी सेगमेंट्स को कवर करेंगे, बट स्लोली एंड स्टेडली. राइट. तो टेक अ गैप ऑफ 1 or 2 days, बाकियों के साथ लगाना, एक बार सबसे फर्स्ट टाइम लगाओ, फीडबैक लो सबसे, कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, देन अटेंड अगेन विद मी. जो मैंने क्वेश्चंस पूछे वो प्रिपेयर करके आना. क्लियर? डन? एनी डाउट्स? ना गो अहेड. कोई डाउट है, कुछ पूछना है वो पूछ लो. ये तो कुछ नहीं मैम, एक्चुअली लास्ट टाइम मैं एनपीसीआईएल का दिया था हम्म. तो इधर ही मेरा नरौरा पड़ा था, मेरा सेंटर भी यूपी वालों में। दिस टाइम आई द सेंटर इज कर्नाटक ओके. कायरा। तो आई फोकस, मतलब मैं वो लोग एचआर पोर्शन को उतना ध्यान नहीं दिए, मैं काफी प्रिपेयर करके गया था लास्ट बार भी। तो No, it दे, depends. Like it depends from panel to panel. I tell you from last time, अच्छा, NPCL, one person got all from current. Nothing about organization, nothing about HR, all current affairs. One other person got most of the HR. Third was all technical. So it depends on your panel also. You are the first person, like you're going at the very in the morning time. They're very fresh. They try to grill you for 30 minutes. Then the interview goes on in the stagnation last 6 minutes. In the last time when interview was going to over, it was hardly for 6 minutes for the last candidate. So, you know, like it's your luck also at what time you go. But my work is to make you prepare for every set, situational questions, every kind of questions, grill it to the best right now so that at that time, any question comes up, your mind is always ready. Right? So that लैंग्वेज is का the थोड़ा सा मुझे इशू ज्यादा लगता है एक्चुअली मैम। बात करना जो है ना, जो है वो सही था मेरा, जो बोला था कि जो प्रॉब्लम है कि जो चल रहा दिमाग में वो सामने नहीं आ रहा, मतलब बोलना हाँ, कुछ और है, निकल कुछ और रहा है। एग्जैक्टली. तो वही आपकी कंटेक्स्ट, आपकी क्या सीक्वेंस ही नहीं है. आप पहले सोचते हो ये बोल देते हो, ये उसके बाद अलग लाइन बोल देते हो जिसका हाँ। रेलिवेंस नहीं होता. तो वो पता यस चल जाता है, उससे ही हम पॉइंट्स नोट करते रहते हैं कि नहीं ये तो ये तरह से बोल रहा है. ठीक है. यस। तो ये कॉन्टेक्स्ट पे वर्क करो थोड़ा, बाकियों से फीडबैक लो, फिर दोबारा मैसेज लगाओ. ठीक है. ओके.